Good morning, guys. This is Ayushi and welcome to Follow My Psychology after a long time. So it's going to be a new change, and I was near the new change, so I thought I should show you, and that's it here. You see it? Yes. And I'm going to show you my outfit also, and then we'll continue the story. What happened? Where are you? How is it happening? So I've reached the hospital and I am sitting in the cabin waiting for my guide. If I say guide, I think you have an understanding what it might be. It's a PhD seat, yes. So I've got a clinical psychology PhD in KMC Manipal, and I'm working for the Department of Oncology and Hematology or Pediatrics. So today is my first day. The date of joining is 6th April 2026, marked in the history. So अभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ and I am figuring out some of my documents because one document verification has happened before only, one is remaining जो अभी आज करना है and I am waiting for my guide. First day and I had rounds. खुशी हो रही थी मेरे को, खुशी इतने दिनों बाद कुछ काम हो गया. सो राउंड्स आर गुड. आज तो सब कुछ जान रही हूँ. आई डोंट नो मच हियर. सम एक्सप्लोरिंग पीपल, पेशेंट्स एंड द सराउंडिंग्स. बाल भी बांधे नहीं थे, सो आई हैव टू वेयर द कैप. बट फ्रॉम टुमारो आई अंडरस्टूड क्या क्या मुझे हैंडी रखना है. Yes guys, so finally I just came back to the room, completed the day. I'm going to tell everything I did throughout the day. My parents left back from Mumbai today and abhi just 3 baje gaye, and then after they left I was summing up some work at the department and then I just came by 5 right now. बस रूम समेट रही हूँ, बहुत कुछ बिखरा पड़ा है. I'm not understanding what to do first, what to do next. I'm trying to figure out some things here and there. Other than that, still feeling a little overwhelmed, but somewhere feeling better now because I know I have to do all of this stuff. I finally stepped out for a while. I had to get some things, and this is my outfit. I just love how it feels here, that you can be really light on yourself, not being too hard on yourself, and it's just that people are the same as you, very like-minded. Came back from shopping. So this is the second round. After seeing all the things arranged, I felt some things are much more needed a little. So I got that. I was a little overwhelmed, so I had an emotional breakdown right now, but I'm better. So I follow this journaling. I do journal a lot nowadays. Like from last 2-3 days, I've journaled my feelings. So it's not about that journaling, writing. When you start journaling, you're very like with tears, you're very much overwhelmed, but when you are getting over with the journaling, you see a very much positive side coming in your words only, and that helps you to be positive yourself too. So I feel this is how it helps me. I am going to have my dinner and then get back to you guys. So finally this is the end of the day and I'm tired. I'm very tired. I'm about to sleep, but as said, आज मैंने क्या क्या किया. सो इन द मॉर्निंग जैसे मैं फर्स्ट डे था मेरा, सो मैं गई थी हॉस्पिटल एंड देन आई वेंट फॉर द राउंड्स. जो पेशेंट्स करेंटली एडमिटेड है वार्ड्स में उन्हें देखा. फॉर मी मेनली फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बच्चे पेन में है क्या, बच्चों अगर मूड नहीं है उनका, बहुत ज़्यादा बेजार है, तो व्हाट इज़ मेकिंग देम फील लाइक दैट. एंड अगर बहुत मेडिसिन चालू है तो उनकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है क्या, कोई इज़ द चाइल्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली और मे बी डिलेड रिस्पॉन्स है क्या, ये सब नोटिस करना होता है. और अगर उनके पेरेंट्स कैसे हैं वो भी देखना होता है कि आर दे फीलिंग बेटर, इफ़ दे नॉट फीलिंग बेटर व्हाट इज़ स्ट्रेसिंग देम आउट, ये सब देखना होता है. तो मैंने आज राउंड्स पे गई थी, मैंने इस पर फोकस किया, काफ़ी अच्छा इनपुट मिला. काफ़ी पेरेंट्स को मैं देख पाई जो were not fine and everything. उसके अलावा उसके बाद आई वेंट फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो गया था. दैट वॉज द टाइम आई हैड कम फॉर माई admission order. Okay, there are 2 things in KMC. One is the admission order and one is the joining report. So मेरा admission order already 24 मार्च को हो गया था. ये document verification joining के लिए था. So I went for my the PhD office for my joining and then उसके बाद
I went to the hostel to meet the chief warden कि सारा process payment process हो गया and then they had handed over me the keys and everything. So room set करना था. Definitely मैं room का video बनाऊँगी. I love to make my room video, but थोड़ा मुझे decor करना है. वो करने के बाद मैं definitely room का video बनाऊँगी. That's going to be one thing gonna come up. उसके अलावा आफ्टर दैट आई वेंट बैक. सो तब तक मॉम डैड थे. उसके बाद मम्मी पापा भी they had a train at 3 p.m. from Udupi to Mumbai, so they also left by 2:30. I boarded them off, I see them off, and then उसके बाद I went back to the department. फिर कोई केस कॉन्फ्रेंस था तो उसका कोई डिस्कशन चल रहा था. जो न्यू पेशेंट्स है उनका अपडेट्स चल रहे थे and everything. Then I had a small meeting with my guide and she told me what all in the next 10 days I have to focus on, what all I have to read, and it was very इंट्रूगिंग बिकॉज मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि मुझे करना क्या है. बिकॉज मैं ना एक पर्सन हूँ जिससे स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं ना तो अच्छा लगता है. जब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती आई फीलिंग वेरी एंशियस. मुझे बहुत अनसर्टनिटी से डर लगता है कि मैं क्या करूँगी. सो वो देखकर अच्छा लगा मुझे कि मैम ने मुझे बताया ये पढ़ना है. एंड मैम इज़ लाइक कल का दिन कैसा रहेगा, कौन से टाइम पे कहाँ पे होनी चाहिए तू, एंड what all I should do. She gave me a structure of it and I'm going to share the structure with you from tomorrow. But आज का दिन overall, उसके बाद मैं घर आई after my hospital and then घर आने के बाद I journaled. I was like डाउन. वो तो आपने देख लिया पहले के वीडियोस में, सो आई डोंट हैव टू से दैट. बट फिर मैं डिनर करने गई. डिनर में मिक्स वेजिटेबल रोटी थी. देन इट वाज देयर क्या और था, रोटी थी, दाल चावल थे. तो इट्स अ केरला राइस थिंग ओवर हियर एंड आई लव केरला राइस, द अनपॉलिश्ड रेड राइस. तो मैं आपको मेस का भी वीडियो दिखाऊंगी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ मेसेस ओवर हियर एंड the mess where I go is the Sharda mess, which is the spice and chef ka mess. It is not that spicy, so I'm happy with that food. And if it's not spicy, I'm very happy because मेरे को spicy से acidity हो जाती है और फिर I get very restless throughout the night. So I'm happy with the food not being that spicy. Other than that, everything was to the point. थोड़ा anxious थी आज मैं पूरे दिन, but then I had a lot of work. I had a room to be set it off and I did everything. So I'm feeling good now by the end of the day. I'm happy and I'm enthusiastic. I'm excited for tomorrow. So yes, I would say that days are not difficult. Your perception towards the situation, your perception towards the days, how you look at it makes it difficult for you. So things are not difficult at all. It's our perception to it and I've understood that कि ये जो जर्नी है शायद किसी और के लिए वो सिंपल रहेगी, लेकिन मेरा परसेप्शन जो है उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है. सो आई हैव टू चेंज माई परसेप्शन एंड नॉट द थिंग. आई नो थोड़ा सा डीप है बट ठीक है, अपना टाइम लेके प्रोसेस करो. समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना मैं क्या बोलना चाहती थी और आप रिलेट करते हो क्या उसके साथ. Okay, so good night and take care and stay tuned क्योंकि मैं room का video will be coming up, mess का video will be coming up. We will also explore the other messes. So it's going to be a lot of content on the channel and thank you for following me. Even I was not able to be consistent then also. Thank you so much. Bye. Good night.